हेलो एंड वेलकम टू द स्पोर्ट्स बॉक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, आई एम अगेन जॉइंड बाय माय वेरी गुड फ्रेंड फैजल। और आज का टॉपिक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड काफ़ी पर्सनल भी है मेरे लिए, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव बिन अ वेरी बिग फैन ऑफ द क्रिकेटिंग लेजेंड सौरव गांगुली। सो इन दिस सीरीज हम टाइम टू टाइम ऐसे रिटायर्ड प्लेयर्स के बारे में बात करने वाले जिन्होंने हमारी लाइफ को इम्पैक्ट किया और जिनको हमने देखा हुआ है वाइल वी वर ग्रोइंग। तो आई थिंक फर्स्ट जो प्लेयर मेरे माइंड में आए जिनके बारे में इतनी बात नहीं की जाती जितनी करनी चाहिए, दैट वाज सौरभ गांगुली। सो आज मैं और फैजल उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स जस्ट गेट टू द टॉपिक। लेट्स पहले तो मैं फैजल से पूछना चाहूंगा कि आपकी पहली मेमोरी क्या है सौरभ गांगुली की, वाचिंग हिम प्ले, या व्हाट इज योर फर्स्ट मेमोरी जहां जो आपको याद है? वाज दिस कैप्टनसी और मे बी बिफोर दैट इन द वर्ल्ड कप 99? आपको क्या याद है? So there are a lot of memories, but when he started playing, I was like, I mean, not me, even you were like only 8 9 year old. So इतना कुछ डिटेल में तो याद नहीं है, बट मुझे ये जरूर याद है when शारजा में सचिन के साथ जो पार्टनरशिप उन्होंने की थी अगेंस्ट जिम्बाब्वे, when he went all guns blazing against the bowlers, and that was one epic inning. And तब से I've been a fan of his shots wherein he just comes down the track and hits it over long on and long off. तो मतलब that I have memory of him is वही छक्के मारना, आगे आके ऑफ साइड पे कवर ड्राइव खेलना, ब्रिलियंट है. मतलब I don't think so anyone has even come closer to the kind of sixes that he's hit. Yeah, you're right. And बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने एक बात बोली इसमें, which was the fact that you mentioned that हम शायद 7 8 साल के होंगे जब उन्होंने डेब्यू किया, बट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि ही डेब्यूड इन 92 जब हम दोनों 1 साल के थे. So and it's a funny story because he just scored one ODI, he scored 3 runs against West Indies, and फिर उनको ड्रॉप कर दिया and he wasn't picked in the side for the next 4 years. तो उनको जाके डोमेस्टिक में भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, फिर उसके बावजूद उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उसके बाद. सो टेक्निकली अगर वो 92 में अगर उनको एक रन ऑफ फ्यू मैचेस मिल जाते, ऑब्वियसली वो इतने टैलेंटेड तो थे कि अपनी वो जीत जगह बना ले, तो हो सकता है उनका करियर और ज्यादा ग्लोरियस होता, बिकॉज सचिन डेब्यूड इन 89. तो टेक्निकली Yeah. उनके डेब्यू और इनके डेब्यू में 3 साल का फर्क था. बट अगर आप होलिस्टिकली उसको देखें तो आप रियलाइज करेंगे कि उन्होंने वो 4 साल भी मिस आउट कर दिया. और एक ओडीआई के बाद ड्रॉप करना तो आई डोंट थिंक आज की डेट में विद द सोशल मीडिया एंड ऑल ऑफ दैट पॉसिबल होता. सिलेक्टर की अच्छी खासी धज्जियां उड़ जाती उस पर ऑन द social media side. जैसे MSK Prasad got a lot of flack for his selection during the World Cup especially, and thankfully good riddance उनको अभी निकाल दिया है. And I think Sunil Joshi is the chief selector right now, which is Yeah, and I think what happened with Sourav Ganguly once he took the reins in his hand, he completely changed the fact that instead of dropping the player only if he's had one bad game, he completely changed the entire scenario and he kept giving consistent chances to players who are not even performing. The best example would be MS Dhoni. yes, I mean that is more than evident. It's ironic कि MS Dhoni was the captain जिन्होंने उनको धीरे धीरे करके टीम से Uh, बाहर का रास्ता दिखाया, whereas Ganguly was the one who got him in, and when no one believed in him उन्होंने उनको नंबर 3 पे चांस दिया, and the rest is history. एक और चीज ना, अगर क्रोनोलॉजिकली देखे तो जो इनिंग्स मेरी, ऑब्वियसली आई डिडंट वॉच इट लाइव, बट मुझे जो याद है विच मेड सौरव गांगुली अ प्लेयर वाज हिज डेब्यू इनिंग एट लॉर्ड्स, जहाँ पे उन्होंने सेंचुरी मारी थी. आई थिंक द्रविड और गांगुली ने साथ में डेब्यू किया था वो मैच में, एंड yeah, द्रविड गॉट आउट इन 96 और इन्होंने 131 बनाए थे इन हिज डेब्यू एट लॉर्ड्स. अब आज की डेट में आप खुद देखो, अगर इंग्लैंड जाके खेलने की बारी आती है तो हमारे करंट बैट्समैन चाहे विराट कोहली के आसपास सब फीके पड़ जाते हैं, बट ऑन हिज डेब्यू, एंड I think he scored again in the second match. He scored another century in the second match. So he was basically an Indian player who scored centuries in his first 2 innings, because I think वो पहले मैच में उनकी second inning में बैटिंग नहीं आई थी. So which is again an astounding achievement मेरे ख्याल से. And to do that in his first inning at Lords, इतना daunting हो सकता है. Lords आपको पता है is
considered to be one of the greatest stadiums in world cricket. और उसके बावजूद कंडीशन जो इंग्लैंड में होती है एंड वो टाइम की बॉलिंग एंड आई डोंट नो मतलब आई थिंक दैट itself was a very important phase in his career. और थोड़ा आगे जाते हैं तो 99 वर्ल्ड कप में आपकी क्या मेमोरीज है बिकॉज दैट वाज वो 99 97 टू 99 के जो फेज में वो शारजा जिम्बाब्वे और ये सब भी आई थिंक वो टाइम के आसपास ही आता है दैट I वाज think 99 World Cup ka, it was more about Tendulkar than Ganguly for me because 99 World Cup mein all I remember is Sachin Tendulkar's batting. But what I remember of Sourav Ganguly is the 2002 Natwest Series. That image of him in the Lord's Pavilion when Kev hit the winning runs और उसके बाद जो उन्होंने टी-शर्ट निकाली, gave it back to Andrew Flintoff in his face. तो वो मेमोरी मेरी ज़्यादा recollect मैं कर सकता हूँ because I was watching that game live and I still remember that everyone had given hopes and I saw it in an interview that even Kev's family had given hopes on their own son. So we can imagine that that win would have been such an important crucial thing. Or coming to England and winning finals at Lords is, I mean, the biggest achievement that any captain would have at that point in time. और उसमें वन क्रेडिट जो उनको नहीं मिलता है इन माय ओपिनियन इज द फैक्ट दैट इन दैट गेम ही स्कोर्ड ही गिव द टीम वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट्स आई थिंक ही स्कोर्ड 60 रन ऑफ 40 बॉल्स before he got Yeah, out. That was what set the base because उसके बाद बीच में collapse हुआ but Yuvraj and Kev were only able to revive the innings because start they की got a good मिली start. थी Yeah, 12 12.5 ओवर में 100 रन पूरे हो गए थे सहवाग एंड गांगुली वेंट ऑल गन्स ब्लेजिंग और उनने बहुत ही अच्छी स्टार्ट की तो मेरे and ख्याल I remember there was this particular article that I was reading wherein Cap had mentioned that he was batting alongside Yuvraj Singh and Ganguly ने ऊपर से इशारा किया that do one thing, give the strike to Yuvraj Singh, let him hit and you just stick to your wicket and just play casual shots. और उसके बाद उन्होंने flick करके एक बाउंड्री या कुछ एक सिक्स या कुछ स्कोर किया and Sourav Ganguly's face was furious because he could have got out. Or when Dada gets angry, you know how he is, his aggression. And talking about aggression, बहुत सारे लोगों ने उनके attitude पे भी comment किया है. What do you think about that? यार एटीट्यूड का ऐसा सीन है बिकॉज वीव नेवर नोन हिम पर्सनली वीव नोन हिम एज अ क्रिकेटर और मैं पर्सनली हैव बीन अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम तो उनके अगर इसके बारे में बात करना है कैरेक्टर के बारे में जो दिखता है मैं तो वही बात कर सकता हूँ एंड व्हेन आई सॉ सौरव गांगुली एज अ कैप्टन मैंने देखा वो बहुत ही यूनिट को अपने साथ लेके चलते थे एंड ही वाज अ प्लेयर जिनके लिए people were ready to go under a bus for him. वो ऐसे टाइप के कैप्टन थे. I don't think वो आज भी अगर आप देख लो जो रिटायर्ड प्लेयर्स धोनी और गांगुली के अंडर दोनों के अंडर खेले हैं वो अभी भी गांगुली को एज अ कैप्टन बहुत ज्यादा क्रेडिट देते हैं इवन मोर देन धोनी बी इट हरभजन युवराज बिकॉज क्रिकेट बहुत ही डार्क फेज में था वो टाइम पे और 99 वर्ल्ड कप के बाद वो साउथ अफ्रीका हैंसी क्रॉनियर और ये सारे मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स हुए थे एंड आफ्टर दैट आई थिंक क्रिकेट पे से लोगों को ऑलमोस्ट भरोसा उठ गया था वो तहलका टेप्स आई थी जिसमें इतने सारे एक्सपोजेस हुए थे लॉट ऑफ क्रिकेटर्स स्पीकिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ मैच फिक्सिंग और उसके बाद इनको कैप्टन बनाया गया और I think it was a do or die for Indian cricket at that point in time, world cricket for that matter, because ऐसी चीजें किसी ने सोची नहीं थी हो सकता है वो इससे पहले भी हो रहा हो मैच फिक्सिंग we weren't aware but once it got exposed I think it was the mantle was on him to take the game forward or I think he did really well I think we had a series against South Africa और उसके बाद ICC चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी Yeah. 2000 में नायरोबी में केन्या में so that I think we made it to the finals and lost to New Zealand मेरे ख्याल से I don't remember very well but आप खुद देखें तो that was an era defining role that he taken over कि not only टीम को अच्छा परफॉर्म कराए but टीम को अच्छा परफॉर्म करके उनको जो फैन है जो गेम में जो रिलीजन जैसी मानी जाती थी वो टाइम पे इवन टुडे वो फेथ वापस रिस्टोर करना बहुत ही मुश्किल काम था और आई थिंक नो वन एल्स कुड हैव डन इट बेटर देन सौरव And वो time पे the Australian team जिस हिसाब की थी they had a lot of great players Ricky Ponting, Adam Gilchrist, Hayden, Justin Langer, McGrath, Gillespie and they used to sledge players they used to sledge everyone that
used to go to Australia to play. And Sourav Ganguly was the one who used to give it back. He started giving it back with his performances, with his words. He brought aggression into the game, and uske baad I think people have just carried that momentum, be it Gautam Gambhir or Virat Kohli. पहले ऐसा नहीं होता था दैट इंडियन प्लेयर्स ज्यादा से स्लेज होके रिटर्न में जवाब देते थे, बट नाउ things have turned and people have started giving back to the players, back to the Aussies. So do you think Ganguly played an important part then, and started this trend that okay, we're not the ones who are going to listen and sit silently and just observe, but we are going to give it back to the team? That's very important point because गांगुली ने भी इंटरव्यू में बोला था कि हम हर बार बाहर जाते थे और बहुत बुरी तरह से हार के आते थे. We were lions at home and we were really bad away from home. तो उन्होंने बोला बस हो गया यार, मतलब he just said to his team कि अब बहुत हो गया, बहुत हार गए बाहर जाके, let's go and be competitive. and हर चीज में competitive होना, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑन द फील्ड, बट अगर कोई आपको स्लेज कर रहा है या कोई आपको ज्यादा he's trying to get into your nerve, to give it back to him. because पहले हमारे प्लेयर्स बहुत डरते थे, उनको अपनी गेम नहीं संभाली जाती थी. और क्या होता है जब आप डिसाइड कर लो कि आप अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट भी किसी के साथ फाइट करने का माइंड में बना लो ना, तो अपने आप आपकी बैटिंग और आपका गेम भी इम्प्रूव हो जाता है. फॉर मोस्ट प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स होते हैं जैसे राहुल द्रविड़ जो फोकस नहीं खोना चाहते, बट मेजोरिटी लाइक यू लुक एट विराट कोहली, अगर वो उनको कोई स्लेज कर दे. मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में जब उनका 2014 वाला टूर हुआ था, तो तब लोगों ने उनको इतना स्लेज किया तो उन्होंने एक सीरीज में 4 सेंचुरीज बनाई थी. सो आई थिंक दैट देयर आर सम प्लेयर्स हु गेट रियली स्पर्ड ऑन जब ऐसी सारी चीजें होती है. तो इसलिए मुझे लगा कि दैट स्ट्रैटेजी वाज व्हाट बिल्ट अ बिलीफ इन द टीम कि हम जीत सकते हैं, कि हम क्रिकेट में तो हराएंगे. The only thing that disappointed me was the World Cup finals we were in against Australia that we lost. और भी बहुत बुरी तरह से हारे थे. और आई रिमेम्बर ऐसे रूमर्स फैले थे कि एडम गिलक्रिस्ट और रिकी पॉन्टिंग ने बैट में स्प्रिंग लगा दी है. रिकी पॉन्टिंग का, और अप्रैल फूल पे आया था कि रीस्केड्यूल होने वाला है, फर्स्ट अप्रैल को आया था. वी वर रियली हैप्पी, बट देन दैट वाजंट मेंट टू बी. पर वो भी मुझे याद है, वो वर्ल्ड कप में हम फाइनल में कैसे पहुंचे मेरे को समझा नहीं. वी डिड रियली वेल इन दैट वर्ल्ड कप, एंड लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम वो लेवल पे खेलेंगे. बिकॉज जब हम 2011 वर्ल्ड कप जीते थे, पीपल वर एक्सपेक्टिंग अस टू विन. एक तो इंडिया में था, ऊपर से वो टाइम पे हमारे सारे प्लेयर्स अपने पीक पे. Sachin was also close to his peak. Sehwag was doing very well. Gambhir was, in a purple patch, and सारे players. Yuvraj was just form of. युवराज सिंह ने तो मतलब बैटिंग बॉलिंग. We had Yusuf Pathan. हाँ, bowling attack भी काफी अच्छी थी यार. We had Zaid Khan leading the attack though. और इनफैक्ट युवराज सिंह को वन ऑफ द मैचेस में बॉलिंग के लिए उन्होंने फाइफर लिया था उसमें, तो उसके लिए मैन ऑफ द मैच मिला था. तो ऑब्वियसली वो टीम तो थी, बट 2003 में ज्यादा लोगों ने वो दिया नहीं था, बिकॉज दीस गाइज वर प्रीटी यंग. युवराज वाज प्रीटी यंग, and I mean VVS Lakshan wasn't even picked in the squad. That was something जो उनको काफी affect किया था, I remember. But the way we played, the way we fought, and against all odds for that matter, हम जैसे पहुंचे थे फाइनल में, that was tremendous. और एक और चीज जो मुझे याद आती है, जो मेरे लिए सबसे मेमोरेबल इनिंग्स है. आई नो दैट आपने 99 वर्ल्ड कप की बात की थी, वो टाइम पे सचिन वाज hogging all the limelight, but श्रीलंका के अगेंस्ट टॉन्टन में जो 183 का स्कोर मारा था, आई थिंक एट दैट टाइम सईद अनवर के बाद दैट वाज द सेकंड हाईएस्ट स्कोर स्कोर्ड बाय. एंड वो इनिंग मुझे याद है, आई वाज इन डलहौजी, मुझे बहुत ही अच्छे से विविड मेमोरीज है. और हम जाके उसकी बैटिंग देख रहे थे, एंड मैंने तब क्रिकेट देखना थोड़े टाइम पहले ही शुरू किया था. आई वाजंट इवन वेल अवेयर ऑफ हाउ थिंग्स गो, कौन कितना अच्छा प्लेयर है. गांगुली सचिन पता थे, बाकी मुझे इतना आइडिया नहीं था. एंड उन्होंने जो इनिंग्स खेली थी, आई स्टिल कांट बिलीव. और हमने वो टाइम पे, इमेजिन इन 99 हमने 373 रन्स बनाए थे, which was like unheard of. एंड एक और मैच जो मेरे दिमाग में आता है, आई रिमेम्बर पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने 314 रन चेस किए थे, आई थिंक 97 और 98. दैट वाज माय फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि 300 रन भी बन सकते. because तब तो obviously बच्चे थे, 6-7 साल के थे, we didn't even know कि क्या होता है.
and we got to know that 300 रन बन सकते और 300 रन चेस हो सकते हैं. मुझे याद है ऋषिकेश कानेटकर ने लास्ट बॉल पे 4 मारा था, 2 रन चाहिए थे. That was the first instant, and उसमें सौरव गांगुली won man of the match. I think he scored 128 or 138 in that. ऐसे कुछ उन्होंने runs बनाए थे, and he was a And man now, of the match. yeah, go on. नहीं आप बोलिए please. नहीं तो मैं बोल रहा था that was the golden era of Indian cricket and Sourav Ganguly. But what do you think about the later stage of his career, Greg Chappell wala phase and his comeback? Let's start with the comeback bit. In नहीं, let's 2006. start with the down and then the up, because I think कि वो phase जो आया था जब उनने कैप्टनसी बहुत ज़्यादा seriously ले ली. I think first year में तो उनका फॉर्म इतना अफेक्ट नहीं हुआ था, first couple of years. But I think 2003 के बाद जब वर्ल्ड कप में पहुंच गए थे, इनफैक्ट 2003 वर्ल्ड कप में भी उनने 450 रन बनाए थे, आई थिंक, which was considered to be very good. बट उसके बाद उनका डिप इन फॉर्म ऐसा आया, ही स्कोर्ड 3 सेंचुरीज, ऑल द तीनों नामीबिया और केन्या के अगेंस्ट थी. वो किसी को बताना मत, बट दिस वाज हाउ इट इज. बट उसके बाद देयर वाज अ फेज जहां पे उनके रन नहीं बन रहे थे. इंडिया वाज डूइंग वेल एज अ टीम, इट्स नॉट दैट इंडिया वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल. हम अवेस टूर्स आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ किया, न्यूजीलैंड में ड्रॉ किया, एंड वी डिड रियली वेल इन दैट टाइम फ्रेम. बट उसके बाद मुझे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस अपनी बैटिंग से हट गया, और वो जो शॉर्ट बॉल वाली वीकनेस थी उनकी, वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई. लोगों को लगने लगा इनको आउट करने तो शॉर्ट बॉल डालो, एंड स्पेशली जब बहुत ज्यादा क्विक बॉलर्स होते थे वो टाइम पे, जो बॉलिंग अटैक्स हुआ करते थे, देयर वाज अ वसीम अकरम, शोएब अख्तर, ग्लेन मगरा, जेसन गिलिस्पी, शेन बॉन्ड आई थिंक तब थे या नहीं थे, आई डोंट रिमेंबर. आई थिंक ही वाज वेरी यंग बैक देन. And then there were a lot of brilliant bowlers in that phase. तो वो उनको उस पे टारगेट करने लगे, and I think that more than the ability to play the short ball, उनका जो एक psychological warfare था, that really got to him. And उसके बाद उनका फॉर्म डिप होने लगा, एंड जैसे जैसे डिप होते गया, वो काफी नहीं था कि ग्रेग चैपल को कोच अपॉइंट कर दिया गया, बिकॉज जॉन राइट और सौरव गांगुली का वैसे ही बड़ा आपस में अच्छा होता. They used to argue a lot, but the team got good results. And then when Greg Chappell came in, उन्होंने I think for that phase Indian cricket को बर्बाद किया. Because 2007 World Cup में मुझे याद है कि he was बांग्लादेश के अगेंस्ट आउट हो गए यार, वो तो बहुत एम्बैरेसिंग था. तो जो मुझे याद है कि इनकी थोड़ी टिफ हुई, एंड ग्रेग चैपल डिडंट लाइक गांगुली. उन्होंने एक मेल लिखा था जो बाहर पब्लिक में लीक हो गया था, दैट ही इज नॉट फिजिकली और मेंटली फिट टू बी द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. अब आई डोंट नो ग्रेग चैपल के दिमाग में तब क्या चल रहा था. वाज इट अगर वो टाइम पे उनको कोई रिप्लेस कर सकता था तो कौन कर सकता था एज अ कैप्टन? आई डोंट थिंक सो Sachin would have taken the captaincy, because after he took captaincy that had an effect on his performances with his bat. But do you think there was any other person who was capable of handling the captaincy agar he would have stepped down? I don't think so. At that point, Dravid was an okay replacement, not that he was a bad replacement, but I think that the circumstances in which this happened was very unfortunate. I'm pretty sure वो टाइम पे Dravid को भी ऐसे नहीं चाहिए था कि वो कैप्टन बना दिए थे, और कैप्टन बनाते ही Ganguly's poor form lasted for a few more games and he was taken out. And at that time बहुत लोगों ने उनको बोला भाई रिटायर कर जा. वो जो स्पोर्ट्स तक, आई मीन आज तक के जो एडिटर है विक्रांत गुप्ता, उन्होंने भी बोला कि मैंने भी बोला दादा अभी क्या करोगे आप, बिकॉज ही वाज वेरी गुड फ्रेंड विद हिम. तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं लड़ूंगा. सो ही स्टार्टेड रनिंग, ही स्टार्टेड डूइंग बेटर. छोटे छोटे मैचेस में जाके खेलते थे, मतलब ही यूज्ड टू गो आउट एंड प्ले इन मैचेस व्हिच वर ऑलमोस्ट क्लब लेवल मैचेस में जाके खेलते थे जस्ट टू गेट दैट बैटिंग. एंड व्हेन ही केम बैक, I think जो कंसिस्टेंसी उन्होंने वो फेज में दिखाई, although he didn't score 100 in that phase, but जो कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई है after 2006, जब वो टीम का रेगुलर पार्ट बने, that was amazing. मुझे लग रहा है कि वो फेज पे मुझे वापस लगा कि चलो यार मैंने इतने टाइम उनको खराब फॉर्म में सपोर्ट किया है, now this is his turn to pay me back. Obviously हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस खुद को दे देते हैं as a fan. But I was really happy in that phase that he was doing so well. But उसके बाद जो हुआ, that was again very unfortunate. And आप मुझे बताइए आपके क्या thought थे वो phase में?
So वही फेज का I was just remembering that 2006-2007 में he was the second highest scorer after Jack Callis in tests with average भी कितना था around 60-61 का average था. Even in ODIs he was amongst the top 10 batsmen and he scored at an average of about 40. तो I think he had a few more years left in him and अगर थोड़ा सा और support किया जाता team management और captain से वो time पे तो I think उनके records और भी अच्छे होते. But we know what happened then. And do you think right now, even Dhoni is facing in a very similar situation that the management and the team is not backing MS the way he didn't back Sourav Ganguly? Yeah, I think it's not the same as much as people do think. मुझे लग रहा है कि ये तो धोनी का डूइंग है. उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद आफ्टर दैट रन आउट आए विच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट. मुझे लग रहा है उनकी उसके बाद वो पहले तो आई थिंक कश्मीर या कहीं चले गए टू स्पेंड टाइम विद द आर्मी एंड उसके बाद उन्होंने सोचा मैं आईपीएल में रिटर्न करूंगा एंड आईपीएल भी पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ द कोविड. सो कुछ सर्कमस्टांसेस रही है विच आर मोर बियॉन्ड द बोर्ड एंड विराट कोहली जिसने उनके ये स्टेज पे लाके रख दिया. अभी आईपीएल का कुछ इट्स स्टिल इन द एयर, प्रॉब्ली एक दो हफ्ते में कॉन्फर्मेशन आएगा तो आएगा. बट आई थिंक इसमें इनका काफी रोल था. द डिफरेंस विद सौरव गांगुली एंड एमएस धोनी इज दैट सौरव गांगुली वांटेड टू प्ले ईच एंड एवरी गेम. ही वाज नॉट मेड टू प्ले ईच एंड एवरी गेम. वो धोनी ने बड़ा वियर्ड सा रोटेशन वाला पॉलिसी डाला था कि मैं इतने ही सीनियर प्लेयर्स को खिलाऊंगा, इतने को नहीं खिलाऊंगा, विच वाज वेरी आई मीन अनहर्ड ऑफ. सचिन को कभी ऑल्दो उन्होंने वो ट्रीटमेंट नहीं दिया बिकॉज सचिन इज गॉड एंड यू कांट डू दैट. सो ही वाज वेरी स्मार्ट दैट वे. And obviously Sachin was slightly fitter than the likes of Dravid and Ganguly also. But फिर भी, you know, I think के my only complaint of Dhoni has been that उन्होंने जिस तरह बाकी प्लेयर्स को ट्रीट किया सौरव गांगुली को वो टाइम पे वो सेम बेंचमार्क पे कंपेयर नहीं किया. तो उनकी परफॉर्मेंस उनको ही वाज अंडर दिस प्रेशर कि मैं जो भी मैच में खेलूं अगर मैंने 50 रन नहीं बनाए तो मैं ड्रॉ कर सकूं. और ये जब आपकी एज अ प्लेयर भी अभी आप देखते हैं अंडर विराट कोहली भी बहुत लोगों के करियर्स थोड़े ऊपर नीचे हुए हैं एंड पीपल कम इन 2-3 मैच खेलते हैं एंड देन दे डोंट गेट अ रेगुलर चांस इन द टीम एंड फिर उनका कॉन्फिडेंस चले जाता है. तो आई थिंक ये बहुत ही अनफेयर था जो उनके साथ हुआ था कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो ऐसे कैप्टन थे जो लोगों को 20 मैचेस दे देते थे कि भाई तू 15 मैचेस ले जब तक सिलेक्टर्स बहुत प्रेशर नहीं डालेंगे तू खेल और तेरे को सिक्योरिटी है. बट इन दीज मैचेस यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ. अगर तू एक भी इनिंग्स नहीं खेलेगा देन आई विल हैव नो वे टू डिफेंड यू. तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि सौरव गांगुली वाज आई मीन दैट वाज वन थिंग जो धोनी की व्हिच आई पर्सनली हैव अ कंप्लेंट. जो जिस तरह उन्होंने कुंबले द्रविड़ और कुंबले तो खैर उन्होंने वैसे ही ओडीआई से रिटायरमेंट ले ली थी, वो टेस्ट पे खुद ही कैप्टन थे and then he stepped down. तो मुझे लगता है कि overall the handling of Sourav Ganguly is one which is the most controversial and it was never enough. वो जो भी करे you know, चलो अगर वो regularly 50 प्लस की एवरेज से खेल रहे तो 100 नहीं बना रहे, अगर 100 बना दिया तो स्लो खेल रहे हैं. So there was always an excuse to make him look bad. मुझे ऐसा लगता. But I was also happy with the way he, took over the captaincy of KKR when IPL started, and I was a fan of Sourav Ganguly back then, and that's why I started supporting KKR because of Sourav Ganguly. So उसके बाद भी T20 में भी अच्छा खासा he's performed. He though they couldn't win an IPL, but he's performed decently. And as a bowler, what do you think of him as a bowler? Because I love Sourav Ganguly's action. It was a little unique the way he used to come in to bowl and then, but he used to bowl decently. No, there were. I remember in one of, I think कौन सा वर्ल्ड कप था, I think 99 वर्ल्ड कप में एक बार उन्होंने कुछ 6 विकेटें ली थी 16 रन देके in 10 overs and that was his career best. So I think he won the man of the match for his bowling in one of his games. So I remember he wasn't a very frequently used bowler, but what I like is that जब बहुत बार ऐसा होता था कि विकेट की जरूरत होती थी और ये कुछ बॉलर्स होते हैं ना बिकॉज इनका पेस इतना स्लो होता है, बैट्समैन होते चल इसको तो मैं मारूंगा, और बहुत बार वो ओवर कॉन्फिडेंस में ही यूज्ड टू गो आउट एंड टेक दोस विकेट्स. तो आई थिंक एज अ बॉलर भी मुझे उनका एक्शन तो बहुत ही पसंद था एंड आई वाज वेरी वेल अवेयर, चाहे मैं जितना भी बड़ा फैन था आई वाज वेरी वेल अवेयर कि ही इज नॉट
the best of bowlers और ऐसा नहीं है, but given the correct situations and the correct conditions, जैसे अगर इंग्लैंड में वो bowling करते थे तो he used to bowl in the right areas and be very effective. And I think as a bowler तो खैर छोड़ो, but as a batsman मेरा जो impression छोड़ा है, I mean I wouldn't have been the cricket fan I am today if I wouldn't have had that phase with Sourav Ganguly being behind him. And in fact, after he retired for a couple of years till the 2011 World Cup, I stopped following cricket. मतलब I was that big a fan. And then obviously बीच में और भी phases आए when I wasn't following it as religiously as I used to back in the day. But वो जो 90s वाली बात है ना, जो late 90s early 2000 में जो cricket था ना, वो वापस कभी नहीं आएगा. Because And what about your views? Because I know that we've been friends since childhood, or I've been following cricket and football. So उसके बाद your focus, I remember, shifted from cricket to football. You started following Premier League, and now Dada has also bought his own team, Atletico de Kolkata. So are you following that as well? So to be very honest, I haven't been following a lot of the ISL because I follow European football. I know थोड़ा गलत है, करना चाहिए, but मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है. ऐसा नहीं है, बीच बीच में कभी हाईलाइट्स चल रहे होते तो मैं देख लेता हूँ, but I don't follow the ISL as I do the Premier League. I'm into fantasy Premier League and all of that as well, तो वो और इंटरेस्ट बढ़ा देता है. And obviously football थोड़ा बहुत तो मैं पहले भी देखता था, but when Ganguly retired, मेरा पूरा focus football में चला गया. So I used to watch like 60% of Chelsea's games. I'm a Chelsea fan. So, but उसके बाद ऐसा था मैं हर गेम देखने लग गया था. So that is something which did affect me. और मुझे लगता है personally that उनको वो लाइट में वापस नहीं देखा जाता जिस लाइट में सचिन या धोनी को देखा जाएगा या विराट कोहली को देखा जाएगा. I think he deserves the kind of praise he probably does get from some. I think मैंने जो नोटिस किया जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, they speak much more about Sourav Ganguly than normal fans do. Normal fans, correct. Because cricketers को पता है कि उन्होंने इतने important स्टेज पे क्रिकेट का मैंटल उठाया था और उन्होंने कैसे वो टीम बनाई थी और कैसे लोग आज भी कैसे बात करते हैं उनके जो एक्स क्रिकेटर्स है, बी इट हरभजन, बी इट नेहरा, बी इट जहीर खान, उनके लिए जो रिस्पेक्ट है सौरव गांगुली के लिए, आई डोंट थिंक वो जो एरा 2011 में जिसने वर्ल्ड कप जिताया था वो क्रिएट तो सौरव गांगुली ने किया था. Correct. He laid the foundation जिस पे MS Dhoni built the entire team. And now you see BCCI में जब से उनका रोल हुआ है, first he took over Cricket Association of Bengal and now BCCI. Do you think a person like Sourav Ganguly will bring a change about in the system how cricket is operated in India? यार पर्सनली स्पीकिंग मैंने तो जितना उनको करते हुए देखा है इन दीज लास्ट फ्यू मंथ्स, मैंने कोई बीसीसीआई हेड को करते हुए नहीं देखा. नो बॉल वाला सेपरेट अंपायर रखना जो उन्होंने शुरू किया था आफ्टर द कंट्रोवर्सीज दैट हैपेंड, एंड ही इज अ वेरी प्रोएक्टिव गाय. तो जो भी छोटी मोटी चीजें होती है उनका, उन्होंने बहुत पहले बोला था कि मैं रणजी की लोगों का जो रेम्यूनरेशन है वो बढ़ाना चाहता हूँ. ही इज वर्किंग ऑन दैट. तो ही इज बिकॉज उनकी एक बहुत सही बात है which really hit me, as cricket fans हम इंडियन टीम को फॉलो करते हैं, but probably 95% of professional cricketers या 99% of professional cricketers रणजी सर्किट में रह जाते हैं. They may not get the opportunity that say or the money or the monetary help, ability to earn as much as a Kohli or Rohit Sharma, Dhoni, Ganguly और सचिन. तो मुझे लगता है कि वो चीज आप जब तक एक क्रिकेटर रहे नहीं हो, आप सोचोगे नहीं, या आप वो सर्कल में पले बड़े नहीं हो, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि रणजी वालों की सैलरी बढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनको भी तो अपनी फैमिलीज आगे सपोर्ट करनी है. सो आई थिंक दैट इज वन डिसीजन जो बहुत अच्छा है. एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट अगर आईपीएल होता है तो जिस हिसाब से और जितना सीमलेसली ये कोविड सिचुएशन में होगा, आई थिंक ही इज अ राइट मैन फॉर द जॉब. इससे पहले तो लास्ट बीसीसीआई हेड कौन था मुझे याद भी नहीं है, और ना मैं याद करना चाहता हूँ, बिकॉज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स इन टर्म्स ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन क्रिकेट इन जनरल, आई थिंक इज बीन ब्रिलियंट.
So now let's just hope that COVID का ये situation जल्दी खत्म हुआ and we get to see Sourav Ganguly and taking the role of BCCI president and functioning BCCI the way he's run the Indian cricket team in his era. So how do you want to end this? Do you want to talk about his records? Which is your favorite record by I Sourav Ganguly? personally, the record तो ठीक है यार, मतलब personally I think that जो memories होती है ना, records can't beat them because you look at records retrospectively, मतलब आप आगे जाके पीछे देखते हैं कि क्या किया था उसने लाइफ में, बट वो जो फेज, जो एरा में आप लाइव मैचेस देख रहे होते हैं और वो जो फीलिंग होती है ना, वो कोई स्टैट्स या कोई रिकॉर्ड नहीं बता पाता है. मतलब ऑब्वियसली आज के जो प्लेयर्स हैं उनके रिकॉर्ड्स आर मच बेटर देन द वंस व्हिच प्लेड बैक देन, बट दैट इज आल्सो डाउन टू द फैक्ट कि अभी कितना बैट्समैन ओरिएंटेड गेम हो गया है. नाउ इफ probably if these इसलिए eras को compare करना तो useless है, but the very fact that I used to see him first as a player and then as a captain, मैंने वो phase देखा है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी memories है. और even if I go back today, मेरा जो best phase रहा है following cricket has to be the phase between 99 to say 2003 2004, जब तक he was at That the was also the age जहाँ पे we were trying to understand cricket, and I remember we used to take coaching at that point in time, and तभी वो time पे ऐसा रहता था कि ठीक है, we are trying to understand the game, we are now playing the game and also following cricket, and that time captain obviously was Sourav Ganguly. So default ही ऐसा हुआ है कि the first captain after I started following cricket is Sourav Ganguly. अच्छा अच्छा, परफेक्ट. सो मैंने तो जब शुरू किया था अजहरुद्दीन वाज द कैप्टन, एंड अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली व्हाटएवर जो उनके साथ हुआ वो भी, उसके बाद मेरा तो थोड़ा ट्रस्ट गया था. एंड व्हेन गांगुली को कैप्टन बनाया गया, आई वाजंट दैट बिग अ फैन ऑफ दिस, बट उनकी कैप्टनसी देख के तो आई वेंट एब्सोल्युटली क्रेजी. जिस हिसाब से उन्होंने वो जो फेथ होता है ना, बिकॉज क्रिकेट इज अ रिलीजन, वो आप जब फेथ खोने लग जाते हैं, जो उसको रिवाइव करता है, he is the guy you always remember, and that is what Sourav Ganguly has been to me. So I think that's about it for this discussion. Any concluding thoughts on your part, Faizal? Just that I just wish to see more of him, but unfortunately I couldn't now. The only way he can contribute now is as the BCCI president, and I hope he does serve cricket for the longest time. And I know that जब तक वो है, cricket is in safe hands. Same here, man. I hope he continues this stint for a longer time. So that's about it for us. Thank you so much for watching. And अभी इतना देख ही लिया तो please थोड़ा, I'll also do my pitch. थोड़ा like कर दो, subscribe कर लीजिए. You can switch on the bell notification. We're going to do a lot of videos And henceforth. also, if you guys have any recommendation of which player should we cover in the next discussion, so do let us know बिल्कुल. so that और we can cover that player as well. we're going to do a lot of football as well. I'm going to do a video today only with Sahib where we're going to discuss a few Dream 11 tips. So a lot of content coming your way, and hopefully stay safe and keep watching Sportsbox and spend your quarantine in peace. All right. So that's it. Signing off.